Hello everyone, can you see and hear me? Can you see and hear me? Good afternoon everyone and welcome to the 22nd March, the Hindu editorial section brought to you by Unacademy, and I, Vaishnavi Pandey, will be taking the session again as always. Hello, good afternoon Alpesh. Hi Ritu. Uh, DU LLB का अलग फॉर्म आता है रितु. It is not related to CLAT. DU LLB का फॉर्म आता है. You can fill up that form. I think the exam is going to be in June or July. Hi, good afternoon. Can everybody see and hear me? I think everybody can see and hear me. Yes. All right. So today we have another government and legislative related passage. So we will be discussing that, and the vocabulary related to that, of course, is the first thing that we will be discussing. I hope everyone's preparation is going well. And today, by the way, you have quiz of the 17th, 21st and 22nd editorial का quiz होगा आज 2 बजे in your special session. So please make sure that you are coming prepared. Okay, please make sure that you're coming prepared. And even if you're not prepared, just go through the vocabulary section at least of the 17th, 20th, no, yeah, 20th and 21st, right? All right, so we will be having a quiz at 2. Please do not forget. And the information has already been given on my Telegram channel, which is this. You can scan the QR code that is given over here and you can subscribe to my channel. So I have two special classes today and all that is spoken about in this on this channel, okay? And if you're subscribing to anything, please do not forget to use my code that is VP10. Okay? All right. What a sloppy handwriting. But I think it is legible. Um, really, Shant, is it not working? Okay, so the link will be provided to you in the comment section itself. Don't worry. If the QR code is not working, I will get the link in the session, comment section, okay? All right. So let's get started, shall we? Yes, Ishan, don't you worry. I will be providing it. It is almost there, okay? So don't worry. You will get it right now, okay? All right. Any other request before we get started with the vocabulary? Any other request that you have before we get started with the vocabulary? No? All right. So
Let's start with the vocabulary section, and today we have a lot of words that you will be very familiar with. So please do let me know in the comment section which are the words that you already know the meaning of. Okay, so this is now you are getting to the stage 2 of vocabulary, where you will now be seeing the words being repeated. Okay, so if you have been attending from the very first session, then you will see that you know most of the words now. Okay, so you will see the difference right away. Okay. All right. So the first word that we have is separatist. Okay, which is a noun. Okay, ist jab bhi lagta hai, it is always talking about a type of person, right? I have explained this type of person. So different type of persons are identified with IST. So dentist, scientist, terrorist, all these are IST. Basically, they are all noun and they all talk about people, different kinds of people, okay, variety of people. So a separatist, separation se aaya hai, right? Something that separates. So a separatist is a person who supports the separation of a particular group of people from a larger body on the basis of ethnicity, religion or gender. इन तीनों के basis पे अगर कोई support कर रहा है separation को, अलग होने का separation, अलग होने का, I think Ishant, you must have got the link by now. It is added in the blue strip. Okay. सो बेसिकली ऐसा इंसान जो किसी भी बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे एक बड़े से ग्रुप को सेपरेट करने का सपोर्ट दिखा रहा है, सहमति दिखा रहा है, दैट इज पर्सन इज कॉल्ड अ सेपरेटिस्ट, राइट? सो आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड इट बाय नाउ. अब दूसरा वर्ड देखते हैं, fanatical. Fanatical and in the passage it is not used as an adjective, it is used as a noun. But adjective form समझ जाएंगे तो noun form भी समझ में आ जाएगा. Fanatical is filled with excessive single minded zeal. Okay, तो एक चीज के ऊपर ऑब्सेस करना कि यही होना चाहिए, दिस शुड बी डन, एंड कंप्लीटली सिंगल माइंडेड अबाउट इट, नॉट लुकिंग एट दी अदर साइड्स ओपिनियन, कुछ नहीं देख रहा है कि दूसरा साइड क्या बोल रहा है, इज अ फेनेटिकल पर्सन. ओके, अ पर्सन हु इज वेरी सिंगल माइंडेड on one certain thing that has to be done, yeah, that has to be the way, right? तो ऐसा इंसान जो सिंगल माइंडेड होता है और उसका filled with excessive. Okay, so fanatical is not someone who is on the moderate side, fanatical is on the extreme side. Excessive single minded zeal hota hai, right? So that is fanatical. Not exactly racist. If you're calling separatist or fanatical racist, that would not be correct, because they will be a sub part of these larger groups. ठीक है? अगर separatist की बात करें तो it is not necessary. Racist always is biased towards a certain race, right? So this is a larger group, है ना? क्योंकि it is separating on any of these bases. Okay, so is a person who advocates separation, ठीक है? Supports advocate or propagates, sorry, proponent of separation. Okay. Shivani, good sentence. Don't choose those leaders who believe in separatism. Okay, separatism. Okay, now you will who believe in separatists, because separatist तो person हो गया ना, तो separatist पे believe नहीं करते हैं, separatism पे believe करते हैं, right? Separatist don't doesn't नहीं होगा, don't favor any side. Okay, they don't favor any side. Okay, no, you are absolutely right. Separatist doesn't favor any side. ठीक है. ऋतु, फॉर्म अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लैट 2024, तो नवंबर में यू विल बी द फॉर्म विल कम आउट फॉर क्लैट. ओके. ट्राइबल people face a lot of separatism. Okay, Ishan?
I am fanatical. Okay, Shivani. Okay, what is your excessive, then what are you fanatical about? Then my next question should be, what are you fanatical about? Okay, because किसी एक चीज के लिए single minded होना, right? So you can be fanatical about CLAT being the only CLAT being the best exam, okay, or the most successful exam. Okay, so that would be a fanatical idea. Okay. All right, Mayur, which other books are recommended other than Word Palm Made Easy for vocabulary? Are you asking specifically for vocabulary? Because then I will be able to tell you. So tell me exactly what, like, are you asking for reading or are you asking for vocabulary? If you're asking for vocabulary, I think if you just watch my sessions and you read Word Palm Made Easy, that's more than enough. Okay, so keep watching the session. English in general, if you are again talking about grammatical section, तो उसके लिए अलग book I would suggest. Reading comprehension, I would suggest another book. Vocabulary, I just suggested the book. Functionaries का मतलब क्या होता है? Basically officials होता है. An official, any person who is an official. So a person who has to perform official functions or duties is called a functionary. Okay. Functionaries plural हो गया. तो functionary is a person, an official. Okay, basically an official. Now this is a very important word, daunting. Okay, the task seemed daunting, or it is a daunting task. Okay, so this is an adjective. ing है, इसका मतलब ये verb नहीं है. Okay, but it is an adjective. Seeming difficult to deal with in prospect, intimidating. कोई भी चीज बहुत difficult होती है या जिससे डर लगता है जो चीज करने में, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, दैट टास्क इज कॉल्ड अ डॉन्टिंग टास्क. ओके, और डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट और डॉन्टिंग डिसीजन, ओके, is daunting. Now I still don't see sentences. Come on. Pulverized is reduced to fine particles. Okay, pulverize करना मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में करना. Okay, so pulverizing is just crushing basically. If it is being used in a different connotation, इसका मतलब कैसे use होगा कि someone is being crushed or something is being crushed. Okay, or hopes and dreams are being pulverized. Okay, so hopes and dreams are being pulverized. That means they are being crushed. ठीक है? Yes. Okay. Now next is genocide. Genocide, I'm sure everybody understands genocide क्या होता है. Genocide is the deliberate killing. Okay. अब again I have told you this कि CID जब भी आता है, it is related to kill. Okay, it is always to kill. So you can think of a lot of words that ends with CID and all are related to killing something or someone. Okay, so genocide is mass killing, basically the deliberate killing of a large number of people. तो बहुत लोगों को मारना from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying the nation or group. तो अगर बहुत लोगों को मारना किस इंटेंशन के साथ, ऐसे ही बिना इंटेंशन के साथ नहीं, that is a different terminology. There's a different terminology for that. But having the intention कि उस nation को या उस ethnic group को चोट पहुंचाने का, उनको खत्म कर देने का, उनको डिस्ट्रॉय कर देने का, उन पे तबाही लाने का, नाश करने का. So that is all, again, large number of groups, killing a large number of group with motive of destroying the group or the ethnic group or the nation, है ना, is genocide. Another important word that you will keep seeing very often when we are talking about global issues. Okay, outrage का मतलब क्या होता है? I'm sure yes, Alpesh, absolutely right. That is homicide. That is just murder. Okay. A cold-blooded murder is called homicide. Okay. Not only cold-blooded murders, any sort of murder is a homicide. Okay, because it has come from the word homo, which means same, and side, which means kill. So killing of the same kind is homicide, and that's why murder is called homicide, because we kill the same kind, right? Outrage का मतलब क्या होता है? An extremely strong reaction of anger, shock or indignation. Now outrage is not a very big word, लेकिन यहाँ पर ये जो word है, it is very important क्योंकि ये tone में भी आता है, indignant. Okay, the tone that is indignant is basically an angry
Indignant is an angry tone where the authors are explicitly showing their anger towards a certain issue, topic, or person. Okay, so outrage, sorry, an extremely strong reaction of anger, shock, or indignation. All right, next word is torment. Uttarakhand is daunting cheater group in government exams. Okay. Um, how is it difficult? Cheater group. Ishant, if you replace daunting with difficult, uh, it does not make a lot of sense, this sentence. Okay, so try another one. Hello, Tina. I am not able to pulverize. Okay, Shivani, ईडी नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस होता है. पल्वराइज्ड इज पास्ट टेंस का सफिक्स है. जब भी हमें पास्ट में कोई चीज बोलना होता है तो हम ईडी लगाते हैं, जनरल, नॉट ऑल द टाइम, बट मोस्टली वी एड ईडी, राइट. तो पल्वराइज होना चाहिए यहाँ पर द वर्ड. आई एम नॉट एबल टू पल्वराइज आयरन नेल. ओके. Uttarakhand finds it daunting to, yes, that would be a correct sentence. Good job, Alpesh. Police is daunting in nature. Okay, good sentence. Okay. Can we move on from daunting and pulverized to genocide, outrage and torment? Torment का मतलब क्या होता है? Torment मतलब होता है severe physical or mental sufferings. Okay, so basically अगर हम बात करें trauma gives you trauma से क्या होता है? Torment होता है, right? Trauma is also severe physical or mental, basically mental suffering. Okay, but torment can be a noun and as well as a verb. Same word can be a noun and a verb. Okay, तो पहला वाला जो मीनिंग है इज द नाउन फॉर्म का मीनिंग, एंड दूसरा वाला जो मीनिंग है इट इज वर्ब फॉर्म का मीनिंग. यू विल नोटिस दैट देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि टॉर्मेंट का अगर नाउन फॉर्म देखे तो इसका मतलब क्या होता है? सिवियर फिजिकल और मेंटल सफरिंग. और अगर किसी को टॉर्मेंट कर रहे हो आप या टॉर्मेंट हो रहा है कोई, तो दैट इज कॉज टू एक्सपीरियंस सिवियर मेंटल और फिजिकल सफरिंग. ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो वर्ब क्योंकि एक्शन दिखाता है तो द वर्ड चेंजेस टू टॉर्मेंट्स और टॉर्मेंटेड और टॉर्मेंटिंग. ओके, एंड नाउन शुड बी यूज्ड एज अ नेम. ठीक है, सो the party was a torment for me. Okay, so then you're using it as a noun, and I was tormented at the party is the verb form. ठीक है. फिर आया स्टैग्नेशन. स्टैग्नेंट कोई भी चीज होता है दैट मीन्स इट इज नॉट मूविंग और नॉट फ्लोइंग. सो नेशन आ गया है, दैट इज द नाउन फॉर्म. सो इट इज द स्टेट ऑफ नॉट फ्लोइंग और मूविंग. सो कोई भी चीज अगर स्टैग्नेंट है, इट इज नॉट मूविंग और फ्लोइंग, दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन. हम्म. Torment people are tormented people. Okay, tormented people are not able to do agreements. I'm not able to agree. Okay, I will torment you no more. Wow, Triranga, welcome, and what a welcome. Very nice, good sentence. So the first sentence, good afternoon. My mock score is stagnant. Yes, absolutely correct usage of the word stagnant. Mock scores say you can relate it a lot because generally this is where students get stuck, okay, in mock scores. They become stagnant in that situation. Stalemated, stagnant, all these can be used for your mocks. Now moving on to the next set of words. Rampant is basically an adjective जिसका मतलब अगर हम specially देखा जाए of something unwelcome, कोई चीज जो हम नहीं चाहते हैं कि आए, वो आता है, तो वो अगर spread करता है, flourishing और spreads unchecked. I think rampant भी मैंने एक one of the editorial में मैंने discuss किया था. All right.
रैम्पेंट भी मैंने एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था एंड दिस इज द सेकंड टाइम दैट दिस वर्ड इज कमिंग इनटू पिक्चर राइट सो समथिंग दैट flourishes unchecked. Okay, so something that flourishes unchecked is rampant. Okay, heavy unemployment is now rampant throughout the country. Very nice, Priyanshi. Good job. Earthquake is rampant. Very nice. Good job. Hmm. Okay, now the next word is looming. Shivani, you have a question? Why didn't you come yesterday to the session, Triranga, then? Okay. All right. Now, looming. Looming is an adjective of an event. अगर हम एक event के बारे में बात करें तो अब loom जो होता है the word loom is a noun. Okay, which is basically hand loom, थ्रेड राइट सो लूमिंग लेकिन जब हम बात करते हैं तो इट इज लाइक हवरिंग ठीक है हवरिंग हमने देखा था हवर करना इन द सेम वे लूमिंग इज सीमिंगली अबाउट टू हैपन एंड रिगार्डेड एज एन ominous और worrying so something that is कुछ होने वाला है हमने एक और वर्ड देखा था ऐसा इफ यू रिमेम्बर समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन एंटिसिपेशन में बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज consider a good omen, right? So something that is going to happen. Anticipation वाला एक word देखा था. If you remember, and if you can tell me, that would be awesome. Okay, but for now, looming is basically कोई भी चीज ऐसी जो होने वाली है लेकिन कुछ अच्छा नहीं होने वाला है कुछ बुरा होने वाला है जैसे अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो कोविड में lockdown was looming okay as soon as covid started lockdown started looming right तो looming का मतलब the looming lockdown period okay so that means seeming it was about to happen and it was regarded as something that is worrying कि कैसे रहेंगे हम घर पे what are we going to do for some people it was fun though okay inflame inflame का मतलब क्या होता है इन से हमने और एक देखा था with the prefix in insurmountable right uh, then we saw now this is inflame then there is insight insight and inflame both are synonyms okay so inflame का मतलब क्या होता है provoke करना किसी को उकसाना और intensify strong feelings especially anger in someone so basically incite करना right instigate करना so intensify incite inflame instigate all these are synonymous okay that area is full of rampant lawlessness very nice Triranga very nice covid is rampant around here very nice impending can be looming impending yes yes absolutely correct good job Priyanshi mm, board exams are looming yes Shivani board exams are looming absolutely correct sentence new famines are already looming very nice Triranga his comment inflamed the teachers all over the country his comment inflamed ed because this is the verb form तो आप past में use कर रहे हैं तो inflamed use होगा right high school is almost over and college is looming very nice Tina very nice good job I'm so happy to see new students making sentences this is my achievement I'm so happy that you all are doing this and I'm sure I promise you that you will see a difference when you start doing this okay so just make that effort okay diaspora is the dispersion or spread of a people from their original homeland तो अगर diaspora एक noun है जिसका मतलब क्या होता है अगर बहुत सारे लोग एक certain
जगह को बिलोंग करते हैं और वो सडनली दे स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दैट प्लेस, एग्जिडस हो जाता है उनका वहां से, सो दैट इज डायस्पोरा, राइट? Then is malaise. Malaise is a general feeling of discomfort, illness, or unease whose exact cause is difficult to identify. So, कोई भी चीज आपको, you are feeling malaise is basically you are feeling uncomfortable, you are feeling some sort of illness, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या एग्जैक्टली exactly है ये आइडेंटिफाइड नहीं है अभी तक, दैट इज कॉल्ड अ malaise situation. ओके, see, migrants are people who it is about where they settle, right? Where they settle. Migrate karna matlab going from one place. Yes, it is about leaving a certain place. Lekin also about settling in another place. But this, when we talk about diaspora, it is just dispersion or spread. मतलब वो कहीं और जा रहे हैं कहीं. It is not a particular place. They are spreading out from a original homeland. ठीक है? That is the difference. Expedite, something similar to looming. नो, एक्सपर्टाइट का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज मेड फास्ट, राइट? कोई प्रोसेस को स्पीड अप करना इज एक्सपर्टाइट, राइट? एंड लूमिंग इज समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, राइट? नॉट समथिंग दैट वी स्पीड अप, दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है? तो स्पीड अप इज एक्सपर्टाइट एंड लूमिंग इज just something that is going to happen, that is worrying. Okay, then is proponent. Proponent का मतलब क्या होता है? Proponent का मतलब malaise is more like fatigue. Yes, yes, Priyanshi, but um, it can be associated with mental or physical health. Okay. X inflamed होगा शिवानी. X inflamed Y to do murder of his friend. My God, you are dark, Shivani. But X inflamed Y to murder के साथ do नहीं आता है, ठीक है? To murder because it is a verb, you're using it as a verb. So X inflamed Y to murder his friend, not of. Okay, prepositions I think you are using way too much. ठीक है? Diaspora happening in Joshimat. Okay, okay. The malaise has spread countrywide, however. Very nice, Trivandra. Good job. Okay. Now next is proponent. Proponent भी बहुत ही common word है. You will be seeing it in legal matters as well. Proponent का मतलब होता है advocates. एडवोकेट करना कोई चीज को, ठीक है? सो अ पर्सन हु एडवोकेट्स अ थ्योरी, प्रपोजल और कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी एक थ्योरी और प्रपोजल या कोई भी चीज के साथ जो खड़ा रहता है. सो लेट्स से let's say I'm a proponent of feminism. When someone says that, that means I'm a person who advocates feminism. Okay, so proponent का मतलब ये होता है, and it is a noun. Okay, proponent of. Okay, rhetoric. Then we have rhetoric. Rhetoric is anything that you speak to convince someone, to pursue, to convince someone. Okay, to in a persuasive or impressive effect. तो basically language, ऐसा language जो design किया गया है, अगर हम figures of speech भी देखें तो यहाँ पर एक वहाँ पर एक rhetorical figure of speech होता है, rhetorical questions होते हैं, rhetoric होता है. So basically any language that is designed कि आप convince हो जाओ उस language से, but which often regarded as lacking in sincerity or meaningful content. मतलब डिजाइन तो रिटोरिक ऐसा किया जाता है दैट इट इज सपोज टू बी कन्विंसिंग समवन, लेकिन बिना मीनिंग के, उसमें कुछ मीनिंग नहीं होता है. जस्ट समथिंग दैट इज सपोज टू बी सेड और सपोज टू बी डन टू कन्विंस समवन. आप वही कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो टेम्पलेट उनके ऊपर, विदाउट हैविंग लाइक एनी पर्सनल टच टू इट. आप अपना कुछ पर्सनल टच नहीं ला रहे हो उसमें. दैट इज रिटोरिक. ओके,
एंड फाइनली वी हैव एलियनेशन. एलियनेट करना किसी को, मतलब किसी को आइसोलेट करना, किसी को सेक्लूड करना, किसी को एस्ट्रेंज करना. ओके, आइसोलेट एंड एस्ट्रेंज आर ऑल सिनोनिम्स टू एलियनेशन. एलियनेशन इज नॉट अ वर्ब, एलियनेशन इज अ नाउन, लेकिन एलियनेट कर देंगे अगर इसको, तब ये वर्ब हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Proponents are very sensitive. Good job, Shivani. Incidents like murder makes you feel malaise from inside. Very nice, Alpesh. Good job. Eloquence is bit like rhetoric. Hmm. Um, Eloquently speaking, eloquently is basically speaking in a beautiful manner. Okay, in a very nice formulated manner. Okay, but when we talk about rhetoric, it is simply to convince someone. Okay, simply to convince someone. The chapter is mostly wordy rhetoric. Okay, very nice. We are alienated during Corona. We were alienated during Corona. Correct, Priyanshi? Politician is not a proponent of healthcare system. This politician, you can say, Tina, is not a proponent of healthcare system. Very nice. Um, okay. Okay, the leaders of Afghanistan alienated their people in the hour of need. Very nice, Alpesh. Good job. Good sentence. Okay. All right. So these are the words. Can we move on from this? Are all the words vocabulary clear? So let's just quickly look at the words that we have discussed. Separatist, fanatical, functionaries, daunting, pulverized, genocide, outrage, torment, stagnation, rampant, looming, inflame, diaspora, malaise, proponent, rhetoric, and alienate. Okay, so these are the words. Now let's move on. If you are still making sentences, you can carry on making sentences. Still, I give you some important announcements. That is MHCET law exam ka comprehensive sectional and full length mock test अब we are going to be starting. तो सारे सेक्शनल टेस्ट दो होंगे और दो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा. सेक्शनल टेस्ट पहले होंगे जिसमें यू हैव लीगल एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग, टू टेस्ट ऑन 25th एंड 27th ऑफ मार्च. लॉजिकल रीजनिंग का भी दो टेस्ट है विच इज हैपनिंग फ्रॉम 25th टू 27th ऑफ मार्च, 25th एंड 27th ऑफ मार्च. इंग्लिश लैंग्वेज का दो टेस्ट है 26th और 28th को. करंट अफेयर्स एंड जीके का दो टेस्ट है 26th एंड 28th को. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का दो टेस्ट है 27th एंड 28th को. एंड फाइनली द MHCET full length free mock test is available. Two mock tests are available on the 29th and 30th March. Make sure that you are giving all the mock tests if you are appearing for MHCET. Do not forget. Now there is a batch that is starting from from March 30th. Which is a foundational batch for CLAT and AILET aspirants 2024. Now, this is a level up batch, and if you are enrolling in this batch for the first time, please use my code VP10, and I will be taking English language in this batch along with your other favorite faculties, educators. MHCT crash course is available at 4,999 only, so please make sure that you enroll now. Then there is Law Vistara batch, which is an intensive batch for LSAT, SLAT, and MHCT. And again, it's available for a discounted price of 10,999, and you can enroll right now. The Warriors is coming soon, which is a droppers batch for CLAT 2024 aspirants, and the language of communication will always be English. Okay, so I will be again taking English language in this batch along with your other favorite educators. So start enrolling now. Again, don't forget to use my code, that is VP10. Okay, all right, let's get started with the editorial. Are you ready? Is everyone ready? Okay.
Many immigrants suffer from a sense of alienation. Very nice, Triranga, good job. Relatives make me feel alienated. Palak, alienated in between them. Alienated when I'm around them. Okay, not in between, around them. Okay. Uh, Rhetoric example. Okay. His rhetorical statements were still not enough to prove that he believes in the cause. Okay, his rhetorical statements were not enough proof that he believes in the cause. ठीक है? Rhetorical statements. Okay. Um, as a teenager, the editorial. As a teenager, the best way to avoid trouble is to ignore the angry rhetorics, rhetorics of your peers. Very, very nice, Tina. Good job. Um, no, Priyanshi, I'm not. I'm not from any NLU. Okay. I'm an English faculty, and that's about it. Okay. Um, Shivani, I did look at your sentence, didn't I? But I can guarantee you, even though I'm not from NLU, but I can guarantee you, if you're talking about the English section, you can completely rely on me because I have been doing it for quite some time now. Okay. So, trouble in Punjab. Let's talk about this. This was the headline. That's not the headline. This title of the editorial. The government at the center and in the state must guard. Now, must, okay, must guard against separatism. So, this is mostly the conclusion, right? Conclusion of the passage. Now let's start. The police action against violent separatists in Punjab is a case of better late than never. Okay, so better late than never का मतलब क्या होता है? It is very literal. This is a proverb that is used often when we are talking about कि it is better देर आए दुरुस्त आए sort of thing, right? So जो ये जो पुलिस एक्शन हुआ था वायलेंट सेपरेटिस्ट के तरफ in Punjab, ये finally this is something the author is saying that देर आए दुरुस्त आए. Okay, so this action was required but is a bit late but required. Okay. Religious fanaticism. So fanaticism, okay, fanaticism, okay, in the state has been raising its ugly head in recent years and going out of control in recent months with open calls for violence and threats to state functionaries including union minister. तो अभी क्या हो गया है, रिलीजियस फैनेटिसिज्म का केस देखने को मिल रहा है पूरे पूरे स्टेट ऑफ पंजाब में, जिस यहाँ पर इडियमैटिक एक्सप्रेशन यूज किया है, रेज इट्स अगली हेड. ओके, बेसिकली एक ऐसी चीज जो हम नहीं चाहते हैं हो. ओके, सो दैट्स व्हेन वी कॉल इट अगली. ओके, सो समथिंग दैट इज पॉपिंग अप अगेन, एन इशू. इट कैन बी a person, or it can be an idea जो खराब आइडिया है, जो बहुत ही बुरा आइडिया है या बहुत ही बुरा व्यू है, और वो वापस से बुरा इशू है, वो वापस से उभर के आ रहा है, is raising its ugly head in recent years and going out of control in recent months. और कुछ महीने से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, और उसका एग्जाम्पल क्या दिया है ऑथर ने, विथ ओपन कॉल्स ऑफ वायलेंस. खुलेआम लोग वायलेंट वायलेंट कॉल्स कर रहे हैं, वायलेंट थ्रेट्स दे रहे हैं, एंड स्पेशली टू स्टेट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर. तो यूनियन मिनिस्टर को भी ये थ्रेट कॉल्स मिले हैं. On February 23rd, a mob overran a police station, and all these are examples of how the state religious fanaticism is coming into picture, है ना? All these are examples. सबसे पहला एग्जाम्पल दे दिया गया कि इसके वजह से स्टेट का हालत खराब है. दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया यहाँ पर on February 23rd. Mob overran a police station and freed suspects, which was a complete breakdown of law and order. तो एक mob कब बोलते हैं और crowd कब बोलते हैं? This is something that I'm sure grammar में आपने पढ़ा होगा. What is the difference between mob and a crowd? Why is the author calling them a mob and not a crowd? A crowd overran a police station and freed suspects.
Why is it a mob? How nice, Priyanshi. That is so nice to see you here. You're always welcome to my class, and I think the students will also be motivated with your presence. Thank you for your presence. Okay, so yes, coming back to this, so उन्होंने क्या किया, which was a complete breakdown of law and order. ठीक है, अब yes, Trivanga. Yes. Okay. All right, you don't have to make me feel good. It's not that I feel bad that my NLU nahi gayi, but that was just not part of my dream. This was my dream, and I'm living my dream. So be happy for that, okay? Um, okay, let's not discuss about colleges in the comment section. Let's come back to the topic. Let's not do that, okay? Please. Now the challenge appears to be, so यहाँ पर mob is basically some a crowd that is violent. ठीक है, अगर physical violence हो रहा है, what have I written? अगर physical violence हो रहा है, राइट, अगर फिजिकल वायलेंस का कोई भी निशान है, इवन एज सून एज इट इज फिजिकल वायलेंस, तो उनको मॉब कहते हैं. क्राउड इज जस्ट अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर, इवन इफ दे आर प्रोटेस्टिंग लाउडली और अब्यूजिंग, इट्स स्टिल कॉल्ड अ क्राउड एज लॉन्ग एज दे आर नॉट वायलेंट. तो यहाँ पर इसीलिए वायलेंट मॉब के लिए यूज किया गया है. तो उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे पुलिस स्टेशन में घुस गए और कुछ सस्पेक्ट्स को उन्होंने निकाल लिया, which is definitely complete breakdown of law and order, right? The challenge appears to be daunting for the inexperienced Aam Aadmi Party government, and the situation needs more visible coordination and action by the center and the state. तो अब ये जो situation है, ये जो challenge है, ये किसके लिए ज्यादा difficult होते जा रहा है? आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि inexperienced है. यहाँ पर already लिखा हुआ है inexperienced, another word with in starting with inexperienced, insurmountable, inflame, insight, ignite, all these are in words. uh, and they all, I'm not saying they're synonymous, I'm not saying that they mean the same thing, I'm saying that they all have the same prefix, okay? And the situation needs more visible coordination. और इस सिचुएशन के वजह से कहाँ से ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए? स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन चाहिए. द वायलेंट कैंपेन इन द 1980s for a separate Khalistan, supported by Pakistan, had pulverized the state and claimed the lives of a sitting prime minister and thousands of innocents in a genocidal outrage targeting the Sikh community. Okay, now 1980 का केस के बारे में the author is giving substantiating this. Okay, basically ये क्या है, example है to substantiate his point. Okay, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1980 में जो हुआ था उस वो बहुत ही बुरा हुआ था, और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया था, सिख कम्युनिटी को टारगेट किया था. दैट ट्रॉमा, अब ऑथर बोल रहा है कि वो जो ट्रॉमा मिला था उसके वजह से जो मेंटल difficulty people felt should not be allowed to return and torment the community of India. वो वापस से ये केस नहीं होना चाहिए. That is the point of mentioning this case in the first place. ठीक है? Sikh Sikhs are a highly mobile and enterprising community now spread around the world, but economic and social stagnation is taking its toll. So basically, it is saying कि अब the author is making a general statement कि अगर Sikh community को देखा जाए तो they are very mobile या mobile. Basically, it means moving. Okay, anything that moves is called it can is moving from one place to another is called mobile. An enterprising community now spread around the world. तो सारी जगह है, लेकिन अगर इकोनॉमिक और इनका सोशल स्टैग्नेशन जो देखा जाए, इनका जो इकोनॉमिक और सोशल स्टैग्नेशन हो रहा है, that is taking a toll. Taking a toll is basically affecting in an adverse way, something that affects in a adverse way.
बुरी तरह से अफेक्ट करना. एग्रीकल्चर इज फेसिंग अ क्राइसिस एंड ड्रग अब्यूज इज रैम्पेंट. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. दैट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक्स स्टैग्नेशन जिसके बारे में ऑथर बात कर रहा है. तो एक एग्जांपल दिया है, एग्रीकल्चर इज फेसिंग क्राइसिस, एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, ड्रग अब्यूज रैम्पेंट है वहां पर. सो ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स. ट्रबल मेकर्स आर स्मेलिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंसाइट वायलेंस. तो ट्रबल मेकर्स जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए जहां वो तुरंत तबाही मचा सके. ओके, दे बिकम वायलेंट एंड दे just act out. Okay, now moving on to the next one. I hope this is clear. Drug abuse is basically not using drugs for healing purposes or for medicinal purposes, but using it to uh, get high and as um yes, to get high. Okay, that is drug abuse. Okay, um, a wound. I hope till here it is clear. जबरदस्ती ड्रग्स देना is not drugs abuse. Okay, basically जबरदस्ती drugs लेना, even if you're not suffering from something and you're taking drugs for it, uh, it can be synthetic or any other form of drugs. If someone is taking it which is not prescribed and just using it for recreational purposes or overusing drugs, okay, is drug abuse. Okay, malpractices of drugs basically. Understand that. Okay. Triranga. Okay. A wound that is allowed to fester will sicken the whole body. If you remember fester, हमने fester के ऊपर भी बहुत बातें की हैं. Festering, fester. Okay. Wound क्या होता है? एक चोट होती है, right? Any sort of चोट is called a wound, right? So is अगर उसे छोड़ दिया जाए, अनचेक रखा जाए, अगर उस पे ध्यान न दिया जाए, तो वो क्या करता है? फैल जाता है पूरे बॉडी में और वो पूरे बॉडी को बीमार कर सकता है. दैट इज व्हाट दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. अगेन, द लूमिंग, अब इसको कैसे कनेक्ट कर रहा है द ऑथर टू द करंट इशू. द लूमिंग ट्रबल इन पंजाब इज बीइंग इन्फ्लेम्ड बाय अ मिक्स ऑफ रिलीजियस fanaticism, foreign aided opportunism, and a societal crisis. So all these are the factors that are festering in Punjab. ये analogy draw किया है author ने. क्या किया है? Analogy draw किया है. यहाँ पर पहले एक example दे दिया गया wound का. And what is the wound? The looming troubles are the wound. Okay, अब ये इसके वजह से क्या हो रहा है? रिलीजियस फैनेटिसिज्म हो जा रहा है, फॉरेन एडेड अपॉर्चुनिटिज्म हो जा रहा है, एंड अ सोशल क्राइसिस हो जा रहा है. तो यही इसी वजह से इट इज सिकनिंग whole of Punjab. That is what the author is trying to say over here. The mobilization of a section of the Sikh diaspora in the United Kingdom, Canada, and Australia for the cause of separatism is also a worrying sign for India. तो जितने भी लोग इंडिया से, जितने भी सिख इंडिया से यूनाइटेड किंगडम की तरफ जा रहे, कनाडा की तरफ जा रहे और ऑस्ट्रेलिया के जा रहे हैं, एंड दे आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ सेपरेटिज्म, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ही ट्रबलिंग बात है. राइट, इट इज समथिंग दैट इज वरिंग. ठीक है, इंडिया के लिए. The center has to work with Punjab and foreign governments to contain its malaise. Okay, तो तो अब the author is giving the solution over here. इसके लिए क्या करना चाहिए? The center has to work with Punjab. Center को पंजाब के साथ काम करना चाहिए और foreign governments के साथ काम करना चाहिए ताकि ये पूरा issue कंटेन हो सके. ठीक है, ये स्प्रेड ना हो, कंटेन हो सके. Violent tendencies must be nipped in the bud, and proponents of hate must pay a price. So जितने भी what is nipping something in the bud? Violent tendencies must be nipped in the bud. यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है contextually? What is nipping in the bud? It is an idiomatic expression, but what does it mean? Decompose for
Okay, the body starts decomposing. That's what you're saying, Priyanshi, when people go sick. Anyway, so just tell me what do you understand from nipped in the bud and proponents of hate must pay a price. जितने भी ये लोग हैं जो एडवोकेट कर रहे हैं हेट फैलाने में, उनको उनको सजा मिलनी चाहिए. दे मस्ट पे अ प्राइस. दैट मीन्स उनको कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए इस एक्शन के लिए. वायलेंट टेंडेंसीज, जितने भी वायलेंट टेंडेंसीज हैं, अगर कोई भी तोड़ फोड़ मचाने का या कोई किसी की तरफ हेट और वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनको क्या करना चाहिए? halt in its initial stage. Very nice, Priyanshi, very nice. Halt it in its initial stage मतलब basically उनको कुचल देना चाहिए. उनको उनके बड़े होने से पहले, उस इश्यू को बड़ा होने से पहले उनको जब वो छोटी सी ही इशू है उसी टाइम उसको कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रियांशी. काट देना. स्टॉप इमीडिएटली. यस. ओके. Also, there has been a conscious effort to communicate with the Sikh community at large to isolate the toxic elements. There has to be a conscious, all these are shoulds कि क्या क्या करना चाहिए. The author is giving कि ये सारे चीजें actions जो होनी चाहिए. ठीक है. एक तो बोल दिया कि ये प्रॉब्लम सबको जड़ से बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए. फिर इनको सजा मिलनी चाहिए. और जितने भी कॉन्शियस एफर्ट लगाना चाहिए सिख कम्युनिटी की तरफ, ताकि वो टॉक्सिक एलिमेंट्स को, जितने भी बुरे एलिमेंट्स हैं वहां पर, उनको हटा सके. टू द वर्ल्ड एंड टू सिटीजन्स द मैसेज मस्ट बी क्लियर दैट इंडिया रिमेन्स अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल नेशन दैट डज नॉट टॉलरेट और रिक्वायर सेपरेटिज्म. सो ये मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए पूरे दुनिया को कि इंडिया अभी भी मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल नेशन है, और यहाँ पर सेपरेटिज्म का थॉट्स को हम नहीं टॉलरेट करते हैं. ठीक है. अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड द सेंटर हैज डिरेल्ड द एग्रीकल्चरल लॉज दैट sought टू रिफॉर्म द सेक्टर इन 2021. तो जितने भी ये बहुत सारी चीजें इनको डिरेल कर दी है, मतलब इनको मेन अपने ट्रैक पे जाने से हटा दी है. राइट. बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज. राइट. अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन फार्मर्स, पंजाब के फार्मर्स और सेंटर में जो अनबन हुई है, उसके वजह से क्या हो गया है, एग्रीकल्चरल लॉ पूरा डिरेल हो गया है. अपने जो फॉर्म हुआ था रिफॉर्म द सेक्टर ऑफ 2021 को रिफॉर्म करने के चक्कर में दोनों की अनबन हुई है, और उसके वजह से पूरा इशू डिरेल हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट फोर्स अगेंस्ट वायलेंट एलिमेंट्स एंड ट्रस्ट बिल्डिंग विथ द जनरल पब्लिक शुड बी एट द हार्ट ऑफ द रिटोरिक एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. एट द हार्ट ऑफ द रिटोरिक मतलब कन्विंस करने के लिए उनको क्या यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, वायलेंट एलिमेंट्स को हटाना चाहिए. इससे इसके वजह से गवर्नमेंट पे पब्लिक का भरोसा बढ़ेगा. एट एनी रेट नो रिटोरिक फ्रॉम एनी क्वार्टर शुड बी इनकरेज दैट कॉज मोर एलियनेशन. कोई भी इशू ऐसा नहीं लेना चाहिए जो और कन्विंस कर देगा कि यहाँ पर इनको हटाने की जरूरत है, या इनको एलियनेट करने की जरूरत है, या इस ग्रुप को हटाने की जरूरत है. ऐसा कोई इशू नहीं पनपना चाहिए. दैट इज द होल. Then describes it later, talks on the cause, and at last becomes more suggestive at the conclusion. Very nice, Priyanshi. Good job. So here, if you see what Priyanshi is saying, yes, Kavya, please ask. Hi, Rudra, you're very, very late. So, watch the entire session. Okay. Now, my three questions are here. These are the three questions. What is the author's main concern? What was the conclusion of the passage? And what Priyanshi explained is the structure of the passage. जो flow हो रहा है passage का, कैसे flow हो रहा है passage, that is what she is explaining. And my third question is, what does the following idiomatic expressions mean? सबसे पहले raise its ugly head, take its toll, and third is nipped in the bud. इन तीनों का मतलब. Okay, Rudra, I'm glad you will.
Okay, so इन तीनों का मतलब या इन तीनों questions के answers please start if you can give it right now. I will give you 5 minutes of time and we will then wind up the session because and you can write it in the comment section after that as well so that I can see that you have actually made the main idea conclusion. You've got the main idea conclusion and the idiomatic expressions or not. So start. Spots the problem, describes it later, describes it with the help of an exam, with the help of examples uh, on the causes, and at last becomes more suggestive in the conclusion. Yes, absolutely correct, Priyanshi. Good job. यस रुद्र, अगर आप पहले के देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज द वोकैबुलरी इज बीइंग रिपीटेड नाउ, द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द वोकैबुलरी, तो आपके लिए ही फायदा होगा इफ यू आर वाचिंग द प्रीवियस एडिटोरियल्स. यू कैन वॉच इट, इट डजंट हैव टू बी इन एग्जैक्ट सक्सेशन. आप कोई भी एक एडिटोरियल पहले देख सकते हैं, कोई भी बाद में देख सकते हैं. यू कैन वॉच दीज लेटर एज वेल एंड वॉच दिस वन फर्स्ट, सो यू कैन डू एनीथिंग. It is totally up to you. I give you the freedom to do it. Something bad seems and causes trouble. ऑप्शंस. ओके, मेन आइडिया अगर हम देखें तो अगर मेन आइडिया कहाँ पर वी गेट द हिंट ऑफ द मेन आइडिया, वी गेट द हिंट फ्रॉम द 1/3 ऑफ द पैसेज, है ना. तो द पुलिस एक्शन अगेंस्ट वायलेंट सेपरेटिस्ट इन पंजाब इज अ कॉज ऑफ बेटर लेट देन नेवर, नेवर. सो दिस इज वन specific issue that the author has raised. उसके बाद the author says religious fanaticism in the state has been raising its ugly head in recent years and going out of control in recent months. This is the main idea, right? इसी बारे में the author is talking about, right? In the entire passage, this is what the author is talking about, and here is your conclusion. I just want you to give it in your own words, है ना, अपने word शब्दों में आपको यही चीज express करना है, so that you know that it is clear to you, not for me. It is not at all for me. Okay. Uh, take a toll means to have a serious bad effect. Yes, very nice. A serious impact or a bad impact. Okay. Ishant has the author's main concern is religious fanaticism in the state has been rising, and if government wouldn't act seriously then results may be harmful. Now Ishant, you're specifically targeting government over here, लेकिन अगर passage देखो तो the author is talking about government को क्या करना चाहिए, then not just government, the lawlessness के लिए भी ये the people को क्या करना चाहिए, in general क्या करना चाहिए. The author has given a lot of other angles as well, है ना. पुलिस को क्या करना चाहिए, but ठीक है. I think this is absolutely correct. The author's main concern is religious fanaticism in the state, that has been rising, and if government wouldn't act seriously, then the result may be harmful. Yes, very nice, very nice. Sanket, conclusion: the government at the center and in the state must guard against separatism. Thoughts of Khalistan. खालिस्तान के बारे में वुड नॉट बी द कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन अगर आप देखो तो कंक्लूजन में ऑथर इज नॉट सेइंग दैट खालिस्तान का खतरा है. इट इज द ऑथर इज सेइंग एट एनी रेट नो रिटोरिक फ्रॉम एनी क्वार्टर शुड बी इनकरेज दैट कॉज मोर एलियनेशन. तो बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट force against violence with the general public should be at the heart of rhetoric and policy of the government. ठीक है, तो basically the conclusion has to be what the author is suggesting to the government to take actions. क्या action suggest कर रहा है would be the conclusion, है ना. And what would be the tone? It is not asked, but I'm just asking in general कि tone क्या होगा इस पूरे passage का.
Nipped in the bud means something to do immediately so that the effects not worsen. Very nice, Imani. Raise its ugly head means something that bad seems to cause or trouble. Seems and cause trouble. Is happening again, okay, or is coming up again, or is rising again. To stop something at an early stage, nipped in the bud. Yes, Triranga, very nice. All right, so this, I hope it is clear till here, and I hope that you were able to answer these questions. Even if you didn't answer to me, I hope you were able to answer it to yourself. And I will see you again with another editorial tomorrow, same time. And today we have, again, reminding you, a special session at 2 with editorial quiz, and another special session at 6 with editorial quiz. Thank you, everyone. Have a great day. Critical. Yes, tone would be critical. I'm sorry I didn't say this, but yes, tone has to be, because the author is definitely criticizing what is happening in the entire passage. का tone क्या है? Critical है. क्योंकि ऑथर क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है जो हो रहा है वहां पर. मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन में क्रिटिसाइज ही कर रहा है कि जो जो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड फाइनली सॉल्यूशंस दे रहा है. सो इट इज डेफिनेटली क्रिटिकल. ऑलराइट, दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.